back, students, to Standard 10 Physics, Chapter 10, Light, Reflection and Refraction, and we are into the 14th session. In the previous session, we saw when the objects are placed at different positions, how the convex lens and concave lens refract and give images of different nature, different size and at different position. Is that clear to you, children? Okay. Amongst those all ray diagrams we have seen, these two are very important. So I'm going to draw it for you again. And yes, understand the adjustment that we make, children. See, convex lens, ray diagram for image formation when object is placed at infinite distance. Correct, children? Okay. So let me place object at infinite distance. There is no need to show. But you know whether it is convex lens or concave lens. When the object is at infinite distance, the image is formed at F. In case of, yes, convex lens, it is formed at F on the other side. And here F on the same side. But this image is very small. Alright. Now how to make adjustment? Let's see. First ray parallel to principal axis. No, don't do that. First ray you pass through the optical center. So optical center and this image top, alright, should coincide, and draw this ray. This is one incident ray coming from infinite object, passes through optical center and through this top point. Next, children, only this bending you show. कोई भी जगह पे bending दिखा दो, ऐसे दिखा दो, children. This is the second ray. Alright, यहां से वो टॉप से जा रहा है. This is refracted ray. और ये parallel नहीं है, because हमने F से नहीं. So थोड़ा parallel ऐसे लो, फिर थोड़ा ऊपर कर दो. That's it. So this is another incident ray which comes from infinite distance. Then it travels in this direction. और ये ऐसा सीधा निकल जाता है. And show how and where they meet. So here the image is formed. The object is at infinite distance. Alright. Now in this case, yes, the first ray passes through optical center and this top. So optical center और ये top दोनों पॉइंट को रूलर के साइड कोइंसाइड होते हुए एडजस्ट कर लो and draw this. This is incident ray. It passes through straight क्योंकि वो ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है. Alright. Now the second ray very interesting. ऐसे बैंड होके आता है ना बैकवर्ड. So ये एक पॉइंट ले लो, कहीं भी एक पॉइंट ले लो और ये टॉप के साथ और ये बैकवर्ड आपने एक्सटेंड किया, वैसे बताओ. एंड दिस इज द रे कमिंग आउट और वो पैरेलल नहीं, थोड़ा अपवर्ड ऐसे कर दो. सो दिस इज योर इंसिडेंट रे. सो दिस टू इंसिडेंट रेज, yes, give this to emergent rays, and when they are extended backward they meet here. So this is the ray diagram for concave lens. I hope you have understood. In both cases, the image of object at infinite distance is formed at F. Principal focus. Here also principal focus. But here it is real, inverted and highly diminished. Correct? And here it is virtual, erect and highly diminished. बहुत ही छोटा. Is that clear to you? Both are formed at F. This on the opposite side of the lens and this on the same side of the lens as the object. Clear to you, children? Good. These two figures are very important and use this trick that I have shown you to draw the ray diagram for them. Okay? Now let us see Cartesian sign convention for lenses. We have seen Cartesian sign convention for mirrors. Now we shall see for lenses. Only one lens we should see, but I am showing you both.
Very simple, children. It is similar to what we have seen in case of mirror. All right. ये अपना principal axis है. This is optical center. Through optical center, one vertical ray is drawn. This behaves as y-axis. और ये जो principal axis है, it behaves as x-axis. And this optical center जो है, it behaves as origin. Correct? Okay. Now, this is the direction of incident ray. कोई object is always kept on left side. Erect object, so upward height. It is always taken positive. Alright? ये image को देखो. Downward height. It is always taken negative. Alright? Now, here is the ray of light which is going to travel in this direction. Correct? So, object से ray of light इस तरफ और distance इस तरफ measure करेंगे. So, direction of incident ray towards the lens होगा तो it is taken negative. The distance is taken negative. See, this image is here. The distance of object is measured in this direction and the direction of propagating wave or incident ray is same. So it is taken positive. Here the direction of incident ray is this and the direction of measuring the object distance is this. They are opposite. So when they are opposite, it is taken negative, and when they are same, it is taken positive. Is that clear, children? Okay. The simple thing, children, ये y axis है, ये x axis है. To the right of y axis, it is always taken positive. Right of y axis, ये simple समझना. और to the left of y axis, it is taken negative. Any distance measured to the left of y axis is taken negative. Any distance measured to the right of y axis is taken positive. Now look here. अब सीधा देखते हैं यहाँ. This is y axis. बस to the right जो भी distance यहाँ measure करेंगे, that is positive. And to the left, ये to the right, any distance measured to the left will be taken negative. Yes, if the object is erect, it is taken positive. If object is inverted, जो inverted मिला तो यहाँ तो erect ही मिलेगा. देखो image भी erect ही है. So that is also taken positive. Okay, children. In other words, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस या एक्स एक्सिस है, उसके अपर हाफ प्लेन में ऑब्जेक्ट होगा तो पॉजिटिव और लोअर हाफ प्लेन में होगा तो नेगेटिव. देखो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों अपर हाफ प्लेन में है, सो बोथ आर टेकन पॉजिटिव. योर ऑब्जेक्ट इज इन अपर हाफ प्लेन, इट इज टेकन पॉजिटिव. इमेज इज इन लोअर हाफ प्लेन, इट इज टेकन नेगेटिव. ऑलराइट चिल्ड्रन, सो दीज आर द वेरियस Cartesian sign conventions for lenses. I've discussed it. Later in this session, I'll give you those points as well. Okay, children? Alright, children. Now let us derive lens formula. Now, actually, what is lens formula? We have seen mirror formula. What is mirror formula? The relation between focal length, object distance, and image distance. That is called mirror formula. Same, the relation between focal length, object distance and image distance is called lens formula. यहाँ मैं mirror formula लिखता हूँ. Mirror formula. Alright. 1 upon f is equal to 1 upon v plus 1 upon u. U is object distance, v is image distance, and f is focal length. This relationship showing you this equation showing you the relationship between f, v and u, that is called mirror formula. उसी तरह हमें lens formula derive करनी है, and lens formula is this: 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u. यहाँ प्लस है, यहाँ lens formula में माइनस है. So let's see, children, how to get it. All right, पहले ray diagram draw करो. I'm placing the object beyond 2f2. All right, first ray parallel to principal axis. This is A, B. First ray parallel to principal axis. After refraction, it will pass through.
the focal point on the other side, correct? This is incident ray, this is refracted ray. The second ray passing straight through optical center. ठीक है? So here is the image, inverted A dash, B dash between F2 and 2F2. Alright? Okay? Now, here, let's see. आप इसको y एक्सिस कंसीडर करिए. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, चलिए आई शो फ्रॉम हियर. यहां ऑब्जेक्ट है पोजीशन और ये ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइन है. दोनों के बीच का डिस्टेंस, दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u. अभी प्लस और माइनस नहीं लिखेंगे. उसका फोकल लेंथ, रियल फोकल लेंथ इस तरफ है. सो ये फोकल लेंथ से एक छोटा सा वर्टिकल लाइन और दो लाइन के बीच ये मैं डिस्टेंस बता दूं. दिस इज f. इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दूं और ये इमेज है यहां. और ये दो लाइन के बीच जो डिस्टेंस है वो इमेज डिस्टेंस है, उसको कहते हैं v. ऑलराइट, एंड आई राइट द डिटेल. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है? OB. OB, ऑलराइट, इज इक्वल टू सिंबल क्या है? U. और देखो ये y एक्सिस के लेफ्ट में डिस्टेंस, सो इट इज नेगेटिव. इमेज डिस्टेंस, ऑलराइट, दैट इज OB डैश. OB डैश दैट इज इक्वल टू सिंबल V और y एक्सिस के राइट में है, सो दैट इज पॉजिटिव. Then focal length, that is OF2. OF2 वो राइट में है, सिंबल F और पॉजिटिव. Then radius of curvature, O2F2. O2F2, okay, that is capital R और इसी तरफ है y एक्सिस के राइट में, so that is also taken positive. All right children, now to get the mirror formula आपने क्या किया था? Yes, you took two pairs of triangles which are similar to each other. All right, तो वो ट्राइंगल पसंद कैसे करें? तो पहले मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ग्रीन करना है, OB डैश, सॉरी OB, इसको ग्रीन कर दिया और ऑब्जेक्ट को भी ग्रीन कर दिया. Here it is. तो I got this triangle. ट्राइंगल एकदम क्लियर हो गया है, राइट एंगल. ऑलराइट, AO ड्रॉ कर दो. सो यू गॉट दिस ग्रीन ट्राइंगल which involves object distance and object height. Now I am going to pick up image distance, that is OB dash. I am making it red, and then image height, that is A dash B dash. तो ये सीधा OA dash join कर दो. So you got green triangle and red triangle. ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होंगे और ये राइट एंगल. सो बाय ए कॉरोलरी या क्राइटेरियन, यस द ग्रीन ट्राइंगल इज सिमिलर टू रेड, या रेड पहले लिखता हूं. ट्राइंगल A dash B dash A dash B dash O is similar to triangle ABO. Triangle ABO by AA. सीधा लिखना है. Therefore A dash B dash अपॉन क्या मिलेगा? AB इज इक्वल टू, कौन सा लेंगे? वी आर इंटरेस्टेड इन OB एंड OB डैश. वो इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में इंटरेस्टेड है, सो OB डैश, ये वाला OB डैश अपॉन कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा? OB आएगा. करेक्ट. नाउ पुट द वैल्यूज. Therefore, which implies, बोलो, A dash B dash I'll keep as it is, AB I'll keep as it is, लेकिन OB डैश वो यहां है, OB डैश दैट इज प्लस V, और OB यहां है OB दैट इज माइनस U. Therefore A dash B dash upon AB is equal to minus V upon U. Call it result 1. All right children, now we need one more pair of triangle. Okay,
और वो ट्राइंगल कौन सा? ऑल राइट, आई एम इन्वॉल्विंग दिस अगेन, image height, and on the principal axis I am taking this F2B, ये which forms right angle. So ये triangle मिल गया blue, I got this triangle. All right children, उसी के साथ में दूसरा triangle blue vertically opposite angle, और ये triangle ले लेता हूं, यहां एक नाम दे देता हूं D. So triangle DOF2 and triangle A dash B dash F2. Yes, ये right angle है, ये vertically opposite angle. So they are similar. Children, ये triangle में image height is involved, but in this triangle image height is not involved. But look, ABOD, ये दोनों perpendicular और parallel, ये parallel. So this is rectangle. So ये opposite sides are equal. So OD equal to AB. OD equal to AB. ये ध्यान में रखना. So OD के जगह पे आप AB रख सकते हो. So now straight away I'm going to write triangle, and triangle A dash B dash F2 is similar to triangle. Be careful. DOF2. यदि आपको पता ना चले तो डैश 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 लिखो. F2 corresponds to F2, F2 last, तो F2 last, और O corresponds to B dash, B dash की जगह पे O, और आपको मिल गया वो D, ओके, by AA. Therefore आप ये पिकअप करेंगे, A dash B dash upon OD is equal to, ये डिस्टेंस में इंटरेस्ट है, B dash F2, B dash F2 upon, यहां से मिलेगा OF2, which implies A dash B dash upon what is OD, that is AB, is equal to, ये बताने की जरूरत नहीं है, AB, alright, is equal to, now B dash F2, ये B dash F2 जरा समझिए, O dash F2 dash B dash, so OF2 plus F2B dash is equal to OB dash, करेक्ट. तो यहां हमारे पास क्या है? B dash F2, ये B dash F2, so that is equal to OB dash minus OF2 upon OF2. कहां है OF2? वो तो सीधा फोकल लेंथ ही है. OF2 is focal length, so I'll write OF2. Therefore A dash B dash upon AB is equal to OB dash, that is image distance, which is positive V, so plus V, minus OF2, that is focal length, that is plus F. ये माइनस तो यहां फॉर्मूला का जो फॉर्मूला हमें मिली, अपॉन OF डैश वो प्लस F. ऑलराइट, कॉल इट रिजल्ट 2. सो देखो, A dash B dash upon AB, A dash B dash upon AB are left hand sides of result 1 and 2. So by 1 and 2, it follows that right hand side minus V upon U is equal to right hand side V minus F upon F. Go for cross multiplication. Minus VF is equal to U into V minus F. Children, आपको F को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाना है. Therefore, minus VF डिस्ट्रीब्यूट करो UV माइनस UF. ऑलराइट, ये F वाली टर्म एक बाजू करो, यहां F है, यहां F है, वो एक बाजू करो, ये टर्म ये बाजू आएगी. सो प्लस UF, ये टर्म वही है, लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस VF इज इक्वल टू UV. F को कॉमन निकाल दो, सो U माइनस V इज इक्वल टू UV. F को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बना दो, सो F इज इक्वल टू UV अपॉन U माइनस V. उसको इनवर्स कर दो, इन्वर्टेंडो, 1 अपॉन F इज U माइनस V अपॉन UV. इसको स्प्लिट करो, सो U अपॉन UV माइनस V अपॉन UV. सो व्हाट कैंसल्स? U cancels, V cancels. That gives me 1 upon V minus 1 upon U, and that is 1 upon F. And this is your length formula. मिरर फॉर्मूला में थोड़ा लंबा था, यहां डायरेक्ट मिलता है. Is that clear to you, children? I hope you have understood well. So before I end up this session, let's see what we learned in this session.
All right, what we learned in this session? Cartesian sign convention. All right, let's see here Cartesian sign convention. As shown in the figure here, O, that is optical center and it is taken as origin. वो ऑप्टिकल सेंटर को ओरिजिन लिया गया है इन कार्टेशियन सिस्टम. द प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑलराइट, ऑफ लेंस इज एक्स एक्सिस. दिस प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस इज टेकन एज एक्स एक्सिस and principal axis at optical center is considered at y axis, not principal axis and perpendicular axis. Yes, now this perpendicular axis at O to principal axis is considered as y axis, correct? Okay, next, the object on left hand side of the lens, so light ray is incident from left to right. Yes, objects are always placed on left hand side, so ray of light is always incident from left to right. Left से right तरफ incident ray जाती है. All distances are measured from optical center O parallel to principal axis. ये ऑब्जेक्ट यहाँ है, so O से डिस्टेंस मेजर किया जाता है. इमेज यहाँ है, तो ऑप्टिकल सेंटर O से ही उसका डिस्टेंस मेजर किया जाता है. ऑलराइट, दैट्स द पॉइंट. द डिस्टेंस इज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे. यस, यहां डिस्टेंस हम डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ये डायरेक्शन में और उसी डायरेक्शन में हम डिस्टेंस मेजर करें, सो दैट इज टेकन पॉजिटिव. एंड डिस्टेंस इज मेजर्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन नेगेटिव. यस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस तरफ मेजर करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, सो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये और डिस्टेंस की डायरेक्शन ऑपोजिट, सो व्हेन इट इज ऑपोजिट इट इज टेकन नेगेटिव. The height measured upward and perpendicular to principal axis is taken positive. This height upward measure करेंगे and perpendicular to principal axis are taken positive. And the height measured downward and perpendicular to principal axis is taken negative. ये height perpendicular है principal axis को और downward है, it is taken negative. The focal length of convex lens is taken positive. Yes, ये फोकल लेंथ, उसका रियल फोकल लेंथ यहाँ है, सो फोकल लेंथ इज टेकन पॉजिटिव. और ये तो बैकवर्ड एक्सटेंड करके मीट करता है, सो उसका रियल फोकल लेंथ इस साइड है, सो दैट इज टेकन नेगेटिव. रिमेंबर दिस. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इन दिस सेशन वी लर्न लेंस फॉर्मूला. एंड व्हाट इज द लेंस फॉर्मूला? 1/f is equal to 1/v minus 1/u. That's all in this session. See you in the next session. Till then, goodbye.